So let us take our next topic taken here is in quantitative electrolysis. Quantitative electrolysis means in this case you get questions for amount of the substances deposited, discharged, reacting at anode and cathode. The questions on this topic are based on the two basic laws of electrolysis called as Faraday's laws of electrolysis. So let us take this Faraday's laws. Faraday's laws of electrolysis. We will take two basic laws. In basic laws of electrolysis are called Faraday's laws. What is first law taken here? Faraday's first law. You write on the statement. You people write on the statement of Faraday's first law. क्या होता है लिख लीजिए. It states that the mass of a substance deposited or discharged at an electrode is directly proportional to the charge passed through it. Directly proportional to charge passed through it. Okay, so how we write this relation mathematically? We can take mass of a substance deposited or discharged at an electrode is directly proportional to charge passed through it. I can write charge as Q, mass proportional to charge, or I can write here expression as mass is equal to, when we remove the sign of proportionality, I can write here ZQ. Z can be taken, this Q can be taken current into time in seconds, so Z into I into T. Z can be taken E upon F ratio I into T. These different expressions we can use for calculation of amounts of substances depositing or reacting at anode or cathode. In this case, in this expression, M is the mass of a substance deposited or discharged in gram. Mass in grams. About units, be very careful. Sometimes the question is just give different units, and if you don't take care of units, you will commit silly mistake. So don't commit silly mistake. Be smart. About units, be careful. आपको मैं यहाँ पे सारे यूनिट लिख रहा हूँ. M क्या है? Mass of a substance to be taken in grams. Q आपका हुआ charge in coulombs. C I is current in amperes. T is time in seconds. F is called, E is called as equivalent weight of a substance, which is either produced or deposited or reacting. This equivalent weight is how much it is molar weight of a substance by n factor. The same n factor we have used earlier in stoichiometry. We have in this case a redox reaction. So we can get the compound by either oxidation or reduction. So in the redox reaction, what can be n factor value? It is number of moles of electrons lost or gained for 1 mole of substance. यहाँ पर n क्या हुआ? n factor यहाँ पर. This n factor can be taken here. Number of moles of electrons lost or gained for 1 mole of substance.
और F क्या हुआ आपने, फैराडे कांस्टेंट, F इज टेकन फैराडेज कांस्टेंट, वैल्यू टेकन ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज हाउ मच, इट इज 96500 coulombs. That is 1 Faraday. 1 Faraday is taken here, 96500 coulombs. We write this as 1 Faraday of electricity means the charge which is equal to 96500 coulombs. How this charge come in 1 Faraday as 96500 coulombs? It can be coming like, okay, let's take next slide. इसको लिख लो पहले आराम से कि आपका m क्या है, मास, ध्यान रखो अबाउट यूनिट्स, आपका m होगा मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स, q इज चार्ज इन कूलम्स, करंट होगा आपका I इन एम्पियर्स, टाइम इन सेकंड्स, E आपका होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, इट इज मोलर वेट बाय m फैक्टर। यहां पर क्या रिएक्शंस होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है, व्हाट इज m फैक्टर वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड, लॉस्ट और गेन्ड फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस आपका डिपॉजिट होगा, प्रोड्यूस होगा या रिएक्ट करेगा, उसका 1 मोल के फॉर्मेशन में या डिकम्पोजिशन में कितने इलेक्ट्रॉन आपके इन्वॉल्व होंगे, वो उसका हुआ n फैक्टर वैल्यू। F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, इट इज 96500 coulombs. This charge is called 1 Faraday. This 1 Faraday I told right now how this 1 Faraday will determine. The 1 Faraday is the charge carried by 1 mole of electrons. 1 mole of electrons. This value is how much? The charge of 1 electron only take magnitude 1.6 into 10 to power minus 19 coulombs into 1 mole of electron is 6.023 या 022 into 10 to power 23. 1 mole of electrons means this many electrons, charge per electron this much. When it is multiplied, the value will come slight different than 96500 coulombs. But for our calculations, we will take the value by taking approximation 96500 coulombs. This charge is defined as the charge carried by 1 mole of electrons. So 1 Faraday simply indicate the charge of 1 mole of electrons, and it is how much, this much. It is taken by approximation 96500 coulombs, but not exactly same. But हमारे क्वेश्चन में इसको इतना वैल्यू ले सकते हैं आराम से। अगला पॉइंट आएगा इसमें, हमारे पास क्या होगा, we have explained the meaning of Q, I, T, E, F. Only one thing is remaining Z. What is Z? Z is called as electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. ECE. Electrochemical equivalent. How this electrochemical equivalent can be defined? This electrochemical equivalent can be defined as the mass of a substance. It is the mass of a substance deposited by 1 coulomb of charge, or we can define otherwise also the mass of a substance deposited by passing a current of 1 ampere for 1 second. That the mass is then called as electrochemical equivalent of a substance. आपका एक्सप्रेशन सिंपल है, अगर हम बोलते हैं इस एक्सप्रेशन में Q is equal to 1 coulomb, इस इक्वेशन में अगर हम बोलते हैं Q equal to 1 coulomb, तो मास कितना होगा, Z होगा डेफिनेशन। या हम बोलते हैं इस एक्सप्रेशन में I करंट दिया है 1 एम्पियर और टाइम दिया है सेकंड में 1 सेकंड, अगर करंट दिया है 1 एम्पियर, टाइम 1 सेकंड, तो कितना चार्ज हुआ, 1 coulomb. So second part of definition, then mass कितना होगा, equal to Z. Mass equal to how much, Z. Actually यहाँ पे क्या होता है कि this Z is taken equal to E upon F. How do we write Z equal to E upon F? देखिए, this much charge can deposit how many gram equivalent? 1 gram equivalent of a substance, because for 1 mole of electron they can deposit or they can discharge 1 mole
1 gram equivalent of substance. In 1 gram equivalent substance formation, they involve 1 mole of electron. 1 mole of electron means this much charge. So this much charge can deposit how much mass? Equal to equivalent mass. Then 1 coulomb of charge can deposit how much mass? Is taken E upon F. इतना चार्ज अगर होगा तो कितना मास आपका आना चाहिए? इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस. समझ आ रहा है? तो अगर हमारे पास चार्ज दिया है, सोचो ना, आपका ये बराबर दिस इज इक्वल टू दिस, तो मास कितना आपका जाएगा? इक्वल टू इक्विवेलेंट मास. तो दिस मच कूलम ऑफ चार्ज कैन डिपॉजिट मास इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस. सो इफ द चार्ज इज टेकन 1 कूलम कैन डिपॉजिट हाउ मच मास इज टेकन? E upon F. So that is called electrochemical equivalent. Sometimes they may ask you definition also कि इसका definition क्या है, या they ask definition of even Faraday constant 1 Faraday. तो 1 Faraday क्या है? Simple charge carried by 1 mole of electron is Faraday constant, and Z is called electrochemical equivalent of a substance is equal to mass of a substance deposited by 1 coulomb of charge, or the mass of a substance deposited by passing a current of 1 ampere for a time of 1 second. I hope it is clear. Faraday's first law. अब इसमें क्या होता है कि आपको मास अननोन होगा, वैलेंसी अननोन हो सकती है आयंस के लिए, या आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास या करंट या टाइम कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस. You get calculations on this different terms involved in Faraday's first law. Okay, so that is Faraday's first law. In solving Faraday's first law based questions, one trick is very helpful to you. ट्रिक क्या होता है? लेट अस एक्सप्लेन टू यू. आपका ट्रिक क्या है इसमें? देखिए, हमारे पास इसमें क्या होता है, इसी इक्वेशन पे लास्ट पार्ट है m अपॉन e इज इक्वल टू हाउ मच आई कैन राइट it अपॉन f या q अपॉन f. एक्सप्रेशन के it कितना है? q इनटू f. तो ये टर्म क्या होता है? दिस टर्म गिव व्हाट हियर? दिस टर्म विल गिव द number of Faradays. और ये क्या है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. गो बैक इन स्टोइकियोमेट्री. द वेट ऑफ ए सब्सटेंस बाय इक्विवेलेंट वेट या मास बाय इक्विवेलेंट मास क्या देता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस. दैट द ट्रिक, सिंपल ट्रिक कुछ नहीं, बहुत सिंपल बेसिक एप्लीकेशन है. m अपॉन e क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. और ये क्या हुआ? नंबर ऑफ Faradays. When they ask question, find the number of Faradays required for deposition of this much mass or amount. तो क्या करना आपको इस क्वेश्चन में? To find the number of Faradays, we simply find number of gram equivalent of a substance. And how to find number of gram equivalents? Number of gram equivalents can be taken. ये आपको याद होगा, तो आपको मैं एक बार और रिपीट करता हूँ. Number of gram equivalents can be taken weight upon equivalent weight. What is equivalent weight? Molar weight by n factor. What is weight upon molar weight? Number of moles into n factor. These different expressions will help us to find the number of gram equivalents of a substance. These different expressions will help us to find the number of gram equivalents of a substance. Weight upon equivalent weight, या weight upon molar weight into n factor value, या number of moles into n factor value. तो जैसे क्वेश्चन दिया होगा आप वैसे कर सकते हैं. n factor क्या आएगा इस केस में? Number of electron exchange lost or gained for 1 mole of substance. n क्या है? n factor क्या होगा? Number of moles of electrons exchanged for 1 mole of substance. इसको आप ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है? फिर क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इजी रहता है. क्वेश्चन पूछता है फाइंड नंबर ऑफ Faradays रिक्वायर्ड, वॉल्यूम द गैस, कुछ भी निकालना पड़ेगा. क्या निकाल सकते हैं डायरेक्टली? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. अगर आप वो निकाल पाए तो डायरेक्टली दैट इज सेम एज नंबर ऑफ Faradays. फ्रॉम नंबर ऑफ Faradays यू कैन फाइंड चार्ज, करंट, टाइम. जैसे भी क्वेश्चन आ पाएगा, स्पेशली दे आस्क कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ Faradays, उस केस में आपका ये सिंपल तरीका है. नंबर ऑफ Faradays कितना होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of substance. How to find number of gram equivalents? By all these expressions, they will help you to find the number of gram equivalents of the substance. So I hope it is clear. Faraday's first law.
इसका एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चंस करने के लिए, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और अप्लाई करना सीख लीजिए। आई विल एक्सप्लेन कि हाउ टू अप्लाई। लेट अस टेक सेकंड लॉ। नाउ इट इज फैराडेज सेकंड लॉ। व्हाट इज सेकंड लॉ? रैंडम स्टेटमेंट, लिखो इसका स्टेटमेंट, देखिए। इट स्टेट्स दैट if equal electricity is passed through two or more cells connected in series, then the mass of a substance deposited at an electrode is directly proportional to equivalent mass, to its equivalent mass. इसका मीनिंग क्या है? ऑन पासिंग सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम चार्ज थ्रू टू और मोर सेल्स in series the current will remain same, the charge will be passed same. So what happens in such cases? The mass of a substance deposited is directly proportional to its equivalent mass or equivalent weight. That equivalent mass term better, E. Or I can write from here m upon E is constant, or we can write from here m1 by E1 is equal to m2 by E2 is equal to m3 by E3 if more contact and so on. So it is Faraday's second law that says the mass of a substance deposited at electrode is directly proportional to equivalent mass. कब होगा? इस कंडीशंस में। समझ में आपको आया? So इसमें होता है क्या, देखिए, if you can just recall the Faraday's first law. Faraday's first law क्या होता था? Faraday's first law में m upon E क्या था? Q upon F, or I can write IT upon F. If I write here this part is made constant, तो क्या होगा? This part become constant. So second law we can have from first law only in a set of conditions. In a given set of conditions, what conditions? When the current will remain same, time will be same, means charge will be remaining same, means we are passing same amount of electricity through two or more cells connected in series. The mass of a substance depositing proportional to equivalent mass, or the ratio of their masses upon equivalent masses become constant, or m1 by E1 is equal to m2 by E2 is equal to m3 by E3 and so on. So this is taken your second law. Second law, if you can think, we can link to first law easily. We can link the second law to first law easily. कैसे लिंक करेंगे? इस एक्सप्रेशन से। कैसे? अगर हमारा ये राइट हैंड प्रोडक्ट का इक्वल हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट भी सेम हो जाएगा। मीनिंग अगर हमारे पास चार्ज कांस्टेंट कर दिया तो रेशियो ऑफ मास अपॉन इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सो इट इज सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ इफ यू थिंक, और फॉर डूइंग अवर क्वेश्चन यू कैन यूज द एक्सप्रेशन दिस वे. इट इज अबाउट सेकंड लॉ and first law of Faraday's. Now when we get questions on Faraday's first law and second law, we use these points in solving the questions. We use these points for solving the questions.
So let us take some practice on this Faraday's first law and second law. Okay. Now let us take some question on this Faraday's laws base. I have written first a simple question here. They have different bits, small bits are there to just make practice of the application of Faraday's laws in such questions. Now write the question. Write in the complete question yourself first and try yourself first. Write the question. लिखिए. Calculate the number of Faradays. Calculate the number of Faradays required or used in following reaction. पहला पार्ट दिया है 0.1 mole of Ag plus ion convert to Ag metal. Second bit 0.2 moles of Cu plus 2 ion give copper metal. 0.2 moles of Cu plus 2 ion give copper metal. Third bit 13.5 gram of aluminium come from Al plus 3 ions. 13.5 gram of aluminium coming from aluminium ions. Bit 4 their production of 5.6 liter of hydrogen at NTP. Production of 5.6 liter of hydrogen at NTP from acidified water. Bit 5 production of 11.2 liter of O2 at NTP from acidified water. Bit 6 to electrolyze 4.5 gram water. To electrolyze 4.5 gram water. Bit 7 to convert 0.4 moles of KMnO4 to manganese plus 2 in acidic medium. Bit 8 last bit to reduce 12.3 gram of nitrobenzene to aniline. To reduce 12.3 gram of nitrobenzene to aniline. तो try all the bits yourself. Hint आपका क्या था? Number of gram equivalent of substance will be same as number of Faradays. So anyway, you try all this question first yourself, then we see solution. Okay. Now let us come on solution part. To solve this different bits, I told simple hint. हमारा hint क्या था? Number of gram equivalents of substance is same as number of Faradays. Number of gram equivalent of substance same as number of Faradays. So this is the basic hint you can use in all the questions. Let us say the first part, when Ag plus ion convert to Ag metal, they involve how many electron? 1 electron. So for reaction of Ag metal, production from Ag plus ion, n factor is 1 for Ag plus ion. हमें दिया ना 0.1 मोल Ag को रिड्यूस करना है Ag मेटल में, तो 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, तो 0.1 मोल में 0.1 मोल कैसे हुआ देखिए. व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag प्लस आयंस? मोल्स इनटू n फैक्टर वैल्यू. मोल्स कितना है 0.1, n फैक्टर वैल्यू 1, कितना हुआ 0.1. इट इज सेम एज नंबर ऑफ Faradays. दैट इज इक्वल टू व्हाट हियर? नंबर ऑफ Faradays is equal to how much? 0.1. So number of Faradays in this question, we cannot answer wise is how much here? 0.1 Faraday. बहुत सिंपल है. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लीजिए. जितना आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं उतना होगा नंबर ऑफ Faradays उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. नाउ कमिंग ऑन सेकंड बिट, व्हेन Cu plus 2 ion will convert to copper, क्या हुआ? They will take 2 mole of electrons. तो इस रिएक्शन में कितना n फैक्टर रहेगा इसका कॉपर के लिए? 2. In the reaction for Cu plus 2 ion, the n factor value will be how much? 2. And then you can solve this question. What is number of gram equivalent of Cu plus 2 ions? Number of moles into 2. Moles दिया है 0.2. 2 इसका n factor value का कितना हुआ? 0.4. So what is number of Faradays? 0.4 Faraday. So answer for second bit become in this case 0.4 Faraday. I hope आपको समझ में आ रहा होगा. बहुत सिंपल है. आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. उस सब्सटेंस का जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है, जिसका अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ Faradays. उतने आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ Faradays. So you can solve this question this way. I hope it is clear. चलिए.
लेट अस चेक नेक्स्ट बिट। अब आते हैं थर्ड बिट के ऊपर। लिखा 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम Al plus 3 ions. When we get aluminium metal from Al plus 3 ions, they will take 3 electron to give 1 mole of aluminium. So in production of 1 mole of aluminium, they involve 3 mole of electrons. So in the reaction for aluminium, N factor will be how much? 3. So now as per the law, what is number of gram equivalents of aluminium? आपको मास दिया है तो weight upon equivalent weight, कितना वेट दिया इसमें आपका 13.5 ग्राम। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? मोलर वेट 27 बाई एन फैक्टर वैल्यू। मोलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 एटॉमिक मास एंड फॉर एल्यूमिनियम एन फैक्टर कितना इसमें 3 है तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मोलर वेट बाई एन फैक्टर वैल्यू। दैट बिकम हाउ मच हियर? 1.5. सो इन दिस केस व्हाट इज नंबर ऑफ फैराडेज? Same as number of gram equivalents of aluminium, 1.5 Faraday. So answer for your bit third become 1.5 Faraday. हमने क्या निकाला? Weight upon equivalent weight. What is equivalent weight? Molar weight by n factor. कितना होगा सॉल्व करने पर? 1.5. So what is number of Faraday here? 1.5 Faradays. Are you clear? Now bit number 4. Production of 5.6 liter of hydrogen at NTP from acidified water. Normally क्या होता है? Pure water is extremely weak electrolyte. The pure water is extremely weak electrolyte. It is made acidic. By making acidic, it become more conducting. So it is made acidified or acidic to make it more conducting. Because it is more conducting than in solution, it can show better conductivity and then reaction can occur at a faster rate. तो reaction क्या हुआ? H2 के production के लिए water can take 2 electron from hydrogen plus 2 OH negative ion. Now for hydrogen in the reaction production, they involve 2 mole of electrons. For hydrogen in the reaction, N factor will be how much? 2. So what is moles of hydrogen? आपको दिया वॉल्यूम एट एनटीपी 5.6 लीटर बाय 22.4 एट एनटीपी will become 1/4 or 0.25 moles. So what is number of gram equivalent of hydrogen? Moles into n factor value. Moles is 0.25, n factor value 2 कितना हो जाएगा? 0.5. So what is number of Faradays? 0.5 Faraday. Answer for this question become 0.5 Faraday for production of 5.6 liter of hydrogen at NTP. That is your bit number 4. We got 0.5 Faraday for liberation of how much hydrogen? 5.6 liter at NTP. Are you clear? Now we take bit number 5. Now bit number 5, production of 11.2 liter of O2 at NTP from acidified water. Production of 11.2 liter of O2 at NTP from acidified water. यहाँ पर क्या होगा देखें? In production of O2 gas हमारा रिएक्शन क्या होगा? Water when give O2 gas plus 4 H plus ion plus 4 electron for production of O2. There is the reaction involved here. This reaction will be involved in production of O2 gas. Now you can see from here, in production of 1 mole of oxygen, they involve 4 mole of electrons. So N factor will be 4 for oxygen. Now for oxygen in the reaction, what is moles? 11.2 by 22.4 liter, 0.5 moles. So what is gram equivalent of O2 gas? Moles into N factor value. Moles तो आपके 0.4 है, 0.5 है, N factor value 4 है O2 के लिए, तो कितना हुआ? 2. What is number of Faradays? Same हो जाएगा 2 Faraday. So you can see it is a very simple technique for solving this kind of questions. You can solve such question comfortably, very easily.
नाउ बिट 6, अब यहाँ पे दे टू इलेक्ट्रोलाइज वाटर, व्हेन वाटर विल बी इलेक्ट्रोलाइज, रिएक्शन क्या होगा इसमें, इट गिव 2 हाइड्रोजन प्लस O2 गैस, वी जस्ट टोल्ड O2 आपका आएगा एनोड पर, एट कैथोड वी विल गेट हाइड्रोजन गैस, so when we add both reaction, that is the net reaction taken here, so we can take here to form 1 mole of O2, they involve 4 mole of electron, for hydrogen 2 mole of electron, so if we take net reaction, involve 1 mole of oxygen, require 4 mole of electron, and 2 mole of hydrogen require 4 mole of electron, so for 2 moles of water, for 2 moles of water reaction require 4 moles of electrons, for 2 moles of water reaction require 4 moles of electrons, therefore for 1 mole of water reaction involve 2 mole of electrons. So in the reaction for water we will have n factor value 2 when it is electrolyzed. So what is moles of water, weight upon molar weight 1 by 4 2.25. What is number of gram equivalent of water, कितना आएगा, moles into n factor value 0.5. What is number of Faradays involved in reaction, 0.5 Faraday. तो आपका बिट 5 हो गया, बिट 6 हो गया. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. बहुत सिंपल है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, बस आपको वहां पे केयरफुल होना पड़ेगा, केवल आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने में ही केयरफुल होना पड़ेगा. अगर आप वो ठीक से निकाल पाएंगे फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों का खेल है, ठीक है. तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, बिट नंबर 7. इन सॉल्विंग बिट नंबर 7 हमारा क्या रिएक्शन है, टू कन्वर्ट पोटेशियम परमैंगनेट व्हेन गिव मैंगनीज +2 स्टेट. आपको ऑलरेडी रिएक्शन दिया है, अगर नहीं भी दिया हुआ तो क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में इट कन्वर्ट टू मैंगनीज +2. आपको याद होना चाहिए था ये वाला पॉइंट स्टोइकोमेट्री से. तो इसमें कितना इसका इफेक्ट हुआ, 5. किसके लिए, KMnO4 के लिए. सो व्हाट इज रिएक्शन वाइज, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी सेम एज नंबर ऑफ Faradays इक्वल डायरेक्टली. कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल्स इसका 0.4 इनटू n फैक्टर वैल्यू 5. इट इज नंबर ऑफ Faradays. कितना हो जाएगा फ्रॉम हियर, नंबर ऑफ Faradays बिकम हियर 2 Faraday का राइट आंसर फॉर बिट नंबर 7. नाउ इन बिट नंबर 8 थोड़ा आपको यहां पे केयरफुल होना पड़ेगा. इन बिट नंबर 8 क्या करना आपको है, नाइट्रोबेंजीन. It is nitrobenzene when convert to aniline. आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा. कैसे बैलेंस करेंगे, यहां पर क्या है राइट साइड में, टू बैलेंस 2 ऑक्सीजन वी नीड टू एड 2 moles of, I write here लास्ट पार्ट जाए, 2 moles of water to balance 2 oxygen atom. On the right side we are adding 2 moles of water and then to balance हाइड्रोजन. एक्स्ट्रा कितना होगा इसमें, 2 + 4 6 हाइड्रोजन, वी ऐड 6 हाइड्रोजन प्लस आयंस. फॉर चार्ज बैलेंसिंग वी ऐड 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लेफ्ट साइड. सो यू कैन सी इन द रिएक्शन टेकन हियर फॉर नाइट्रोबेंजीन n factor will be how much, 6. For nitrobenzene in the reaction n factor will be how much, 6. One method. What is second method here? If you take oxidation number of nitrogen in NO2, you have next to this square. If you write just here, in NO2 for nitrogen oxidation number is how much? Let us take group only. Let us take nitro group separately. Let us forget benzene in both the cases, because the benzene nitrogen in both the cases will have same oxidation number. Let us take group neutral. So in nitro group, NO2 group, in benzene attachment, I assume the group is neutral. Then for nitrogen, oxidation number is how much? +4. And in NH2 group for nitrogen, what is oxidation number? -2. On similar lines.
So from nitrogen convert from +4 to -2 state, it will gain how many electrons? 6 electrons. दोनों तरीके आपके हैं, या तो आपका ये हाफ रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे, इस हाफ रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे, या हम निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू भी निकाल सकते हैं इसको। कितना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है? +4, यहाँ पे -2 हुआ। Gain of electron will be how many? 6 electron gain. So you can take n factor value will be how much? 6 in this reaction. And now n factor value 6 means what is gram equivalent of nitrobenzene? I write in short PHNO2, symbol of nitrobenzene. कितना होगा? Weight upon molar weight is 123. ये हुआ moles into n factor value 6. तो कितना हुआ? 0.6. It is same as number of Faradays as well. So number of Faradays in this case become 0.6. I can add 0.6 Faraday then. So in this reaction, nitrobenzene when convert to aniline, this compound is aniline. In this reaction, N factor will be 6 for nitrobenzene. तो moles कितना होगा? Weight upon molar weight for nitrobenzene. The molar weight is 123. तो weight upon molar weight is moles into N factor value 6. कितना आएगा number of Faraday? 0.6 Faraday. I hope it is clear. That is this how this question you can solve. So it is last bit. So it is basic practice, and you may get question directly in this basic practice as well in different entrance questions. Question have been asked in fact here. I have taken several questions which have been given to you earlier in different competition examinations. अप्रोच बहुत सिंपल है। हमने क्या क्या सारे फॉर्मूला यहाँ पे सारे क्वेश्चन में एक ही रिलेशन यूज की थी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आर नंबर ऑफ फैराडेज। आप बेसिक को अप्लाई करेंगे, दैट इज ओनली ट्रिक, एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली विदाउट मिस्टेक एंड इन शॉर्ट टाइम। तो आई होप इट इज क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट इन एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉज। तो वी विल टेक नाउ सम मोर एडवांस, स्लाइटली मोर क्वेश्चंस having more calculations. So let us take some more questions on this Faraday's law of electrolysis. You write on next question, देखिए, a solution of nickel nitrate, write on the question, a solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 amperes, between platinum electrodes using a current of 5 amperes for 20 minutes. For 20 minutes, full stop. What mass of nickel is deposited at cathode? What mass of nickel is deposited at cathode? Given the molar weight of nickel is 58.7. You can take the nickel atomic mass as 58.7. Okay, so try this question yourself. Now let's come on solution part. To solve this question, we will apply Faraday's first law that relate the mass of a substance depositing at electrode is proportional to amount of charge passed through it. Meaning, if I write the expression for this first law, for mass relation, it can be taken E upon F into IT. For calculation of mass of a substance depositing, we can get by expression E upon F into I into T. Be careful, I is the current in ampere, आपको दिया है. In the given expression, if I take I is current 5 ampere, fine. T is time in minutes. आपको दिया time 20 minutes. Make it seconds. We take time in seconds. In this formula to apply, we take current in ampere, time in seconds. E is the equivalent weight for solution of nickel. Nickel nitrate have nickel +2 state. Then they give nickel metal. So for nickel formation, we will take N factor value 2. So what is equivalent weight? Molar weight by 2. And F is taken Faraday constant. F is Faraday constant. So apply this formula. What is mass of nickel in the case depositing? E is equivalent weight, molar weight by 2. F Faraday constant 96500 coulombs. Current in amperes 5 ampere, and time in seconds. How much time? 20 minutes means 20 into 60. That becomes in seconds. Then this mass will come in grams. On solving, you can find the mass. That mass will come 1.824 gram.
as your answer for this question. So that's very simple question on Faraday's first law base. That mass we are relating with the we can take charge pass through here. Charge can be taken I into T. So as per the relation you can use the formula. Okay. तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपका ये वाला. E आपको निकालना होगा. E क्या होता है? इक्विवेलेंट मास. कैसे निकालते हैं? उस एलिमेंट या सब्सटेंस का एटॉमिक या मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर. यहाँ पर क्या है? निकल के प्रोडक्शन में they consume 2 mole of electrons, so we take n factor value 2 for nickel, and then this question we get the answer. Okay, चलिए let us take next question.